Good morning, student. Welcome back to the second session of this electrochemistry course of integrated B.Sc. B.Ed. Yesterday, I had discussed the fundamental aspects of electrolyte conductance. I had simply discussed the definition of the conductance, resistance, as well as the Ohm's law and other things. And of course, I also discussed about the cell constant. Today is the part 2, and in this part 2 I will discuss the actual definition of specific conductance, then molar conductance, as well as the equivalent conductance. I also discussed the effect of dilution on these parameters and what is the relationship between the observed conductance, specific conductance, or the molar conductance or equivalent conductance. And I will try to solve one or two very simple problems related to these conductance. So let me start with the specific conductance. Now, yesterday I discussed the actual definition of the conductance with the help of the resistance. Basically, reciprocal of the resistance is the conductance. And if we take an electrolyte and there are two electrodes and the distance between these two electrodes is 1 centimeter or 1 meter, then the conductance produced by that ions of electrolyte is generally called the observed conductance. So same thing, suppose I am now taking a cube and length is 1 centimeter cube, 1 centimeter, 1 centimeter, and area of cross section is 1 centimeter square. So that means you can call it is a simple 1 centimeter cube, and you just assume that the two sides, just a minute, I need the blue color, I think, black color, I think, black color is better. If I take this part, one side, and another part is also there, suppose. And there is a solution. You can call it is a one electrode and it's another electrode, and it is connected with these things. So, as yesterday I discussed, the length is L centimeter or 1 centimeter, and the area of cross section is 1 square centimeter. So that specific conductance sometimes can be defined as the conductance of a solution or the electrolyte of 1 centimeter length and 1 centimeter cross, or you can call it is a conductance of a cube. So very small part is there, 1 centimeter is the condition. And if the cell constant is 1, so there is no difference between the observed conductance and the specific conductance. So that means I can write the formula if in some examination such type of question is there, that the observed conductance of an electrolyte is 1 microsiemens,
So what would be the specific conductance? And if the cell constant is 1. So it is same, only thing is that unit is like that, Siemens centimeter inverse 1. You should be very careful while writing the units, because in some examination the values of the observed conductance or the specific conductance in SI unit will be slightly different, because you know how to convert the centimeter to meter or meter to centimeter, like that. So you can call it the conductance of a 1 centimeter cube of a solution. This tells us how 1 centimeter cube solution conducts the electricity. So only 1 cube is there, and we are measuring this type of this, you can call it this part, and the difference is I have already told you. And the distance is 1. So 1 centimeter cube is solution. Now the question is that how do you define the molar conductance and the equivalent conductance? Now it is related to just like if we are considering the equivalent weight, if I take suppose 1 gram equivalent of an electrolyte, so the conductance produced by that 1 gram equivalent of that electrolyte is called as equivalent conductance. But suppose I take 1 gram mole, that means I am considering the molecular weight of that electrolyte or the molecular, then we can consider the molar conductance, or in some books it is written like that, molar conductivity. So don't get confused. So if I take the 1 gram equivalent, and if I take the 1 gram mole, that is the molar conductance. So if you see some old books and other things, you will find that equivalent conductance, but there is no problem regarding the molar conductance or the equivalent conductance. So what should be the definition? The equivalent conductance is the conductivity of all the ions, of course, produced by 1 gram equivalent of an electrolyte. And suppose just you think that earlier there is only 1 cube is there, but now I am taking the 1 gram equivalent or 1 gram mole. So suppose there may be 1 gram equivalent, n gram equivalent dissolved in 1000 ml, 1 liter, 1000 ml. So just you can consider that in place of observed or specific conductivity, केवल एक 1 centimeter into 1 centimeter, 1 centimeter cube था, और आप कल्पना करिए there are thousands of cubes, thousands of the cubes. So naturally the formula of equivalent or molar conductance must be specific conductance multiplied by that volume. Bear in mind that volume in cc, cubic centimeter, और ml, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए, मैं समझाऊंगा अच्छे से. ऑब्जर्व कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हमने केवल एक छोटा सा एरिया लिया, एक क्यूब है 1 सेंटीमीटर की लेंथ की. अब ऐसा कल्पना करिए हमने अब 1 ग्राम मोल ले लिया dissolved in 1 liter solution. So it must be, अगर हमको डेफिनेशन लिखना है
अगर आप मोलर कंडक्टेंस लिखेंगे तो यहाँ पे आप स्मॉल m लिख सकते हैं। आप अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखेंगे तो आप ये EQ लिख सकते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। कंफ्यूजन इज दैट V is very important factors, and that V is the volume in cc containing 1 gram equivalent or 1 gram mole equivalent. Suppose I am taking that in gram equivalent or gram mole dissolved in 1000 ml, right? But what is the definition? The conductivity produced by that ions of 1 gram equivalent. So n gram equivalent, n gram mole is 1000, so 1 gram mole is 1000 divided by n, or whatever the normality, or if I take the equivalent conductivity, I must take the normality. If I am taking molecular weight, number of gram moles, so the molarity or the concentration multiplied by the kappa is the equivalent conductance. So what is the final formula of equivalent conductance? It is nothing like that specific conductance multiplied by 1000 divided by C. C may be in terms of, if I take the equivalent weight, it must be normality. If I take the molecular weight, it must be molarity. Suppose I am taking 0.1 molar KCl, 0.01 molar KCl, 0.001 molar KCl. So in place I should write like that. So now I think it is very clear that इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है और मोलर कंडक्टेंस क्या होता है। मतलब अभी मैं इसके डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज आई एम टेकिंग 1 ग्राम मोल एंड डिसॉल्व इन 9 cc ऑफ वाटर, सो दैट मीन्स आई नीड 9 क्यूब्स, और हर क्यूब्स में का कंडक्टिविटी होगा, जितने उसको हम लोग डाइल्यूट किया, तो V टाइम्स डाइल्यूट किया तो V टाइम्स कंडक्टिविटी। सो इट इज क्वाइट नेचुरल। आप अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस KCl का या एसिटिक एसिड का मेजर करेंगे, उसकी वैल्यू बहुत कम होगा, वेराज जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस का देखेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। इसको हम लोग इस तरह से समझा सकते हैं, लाइक दैट। Yes. So just in some books it is like that. Actually molar concentration is the moles per liter, and that factor 1000 converts liter to milliliters. You know all these things. तो आप समझ लीजिए, अगर आप इसको, हम पहले भी 1 क्यूब को हमने लिया था, अब हम 9 क्यूब्स है, 1 2 3, ये 3, टोटल 9 क्यूब्स है। और अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि ए सोल्यूशन कंटेन्स n ग्राम इक्विवेलेंट और n ग्राम मोल इन 1000, बट हमको डेफिनेशन के हिसाब से निकालना है 1 ग्राम मोल और 1 ग्राम इक्विवेलेंट। सो देयरफॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1000 डिवाइडेड बाय n और 1000 डिवाइडेड बाय m, so that is the formula, like that. So this is called the equivalent conductance. मैं इसको समराइज करूं, फर्स्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस is equal to cell constant multiplied by observed conductance. Molar conductance kappa, specific conductance volume in ml cc containing 1 gram mole.
or I can write like that, kappa 1000 divided by the whatever the concentration, C or M, like that. I think you can understand. I will explain some of the numerical problems so you can understand the things. Yes. Now for sometimes students don't understand the things, so for that I am just repeating the same thing. The conductance due to 1 mole of electrolyte dissolve in a solution. But 1 mole of solute is dissolved in much more than 1 centimeter cube, often 100 ml or 1 liter, just only 10 ml dilution like that. So to determine how much conductance comes from 1 mole, we multiply the conductance of 1 centimeter cube by how many cube contain 1 mole. 1000 क्यूब भी हो सकता है, 9 क्यूब भी हो सकता है, 10 क्यूब भी हो सकता है. सो देयरफॉर हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड कैपिटल बी, तो उसको हम लोग दिखा रहे हैं. फिर वही मैं बात कर रहा हूँ, इमेजिन ए क्यूब जिसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, छोटा सा क्यूब है 1 सेंटीमीटर क्यूब. दैट इज द कंडीशन, बिकॉज yesterday I have shown you the conductance cell where we have taken 2 electrode, platinum electrode, coated black platinum electrode, and उनके दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. और आप कल्पना करिए कि हम लोगों ने उसको 1000 सच क्यूब्स ले लिया. सो क्वाइट नेचुरल है जो 1 सेंटीमीटर उस क्यूब का जो कंडक्टेंस होगा और 1000 अगर हम क्यूब ले लेंगे, so that is the total conductance from all those cubes that together hold 1 mole of solute or 1 gram equivalent of the solute or electrolyte. It is clear? Now the last part I am coming, the effect of dilution. It's a very important thing. So although from the school levels you are learning all those things. So again I am just repeating this thing. The specific conductance tells us how well the whole solution conducts the electricity. But if it is a molar conductance, how well 1 mole of the solute may be strong, may be weak, doesn't matter. Of course, but the effect of dilution may be different for strong electrolyte as well as the weak electrolyte. But that concept is same. It must be 1 gram mole or 1 gram equivalent. So that is the difference between the specific conductance and molar conductance. Now I am giving some of the values of molar conductance and specific conductance. इसको थोड़ा अच्छे से देखिए. I have prepared some solutions like 0.1, 0.02, 0.01 and then infinite dilution. That means 0.1 सबसे concentrate है, फिर 0.02 थोड़ा dilute किया, 0.01 और dilute किया और एकदम infinite dilution. Bear in mind why I have written molar conductance or molar conductivity, because it is moles per liter, इसलिए मोलर लिखा. ठीक है. देन आई हैव रिटन स्पेसिफिक कंडक्टेंस. 2 पार्ट आपको दिख रहा है. वाई? बिकॉज कभी कभी स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता. शायद लास्ट लेक्चर में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसमें मैंने शायद यूनिट को आप थोड़ा देखिएगा. सेम थिंग स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और यहां पे मैं लिखा हूं specific conductance, but be careful because it is not school. Now you are teaching in the university teaching department, and yesterday I told you name of some very good books like physical chemistry Atkins or physical chemistry Levine, physical chemistry by Albert E. Daniels, as well as the very old book
Glaston electrochemistry. That time, of course, they are using the equivalent conductance and the units, CGS unit. But now most of the people are using the SI unit. तो मैंने इसे जानबूझ के यहाँ पे पहले सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर. You know how to convert the centimeter to meter. You know that 1 meter is equal to 100 सेंटीमीटर. तो आप कन्वर्ट कर सकते हो बड़ा आसानी से. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा देखिए, सीमेंस पर सेंटीमीटर, द वैल्यू इज 0.00985. अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि ये हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया एंड द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय द आयंस ओनली दैट पर्टिकुलर, सो द वैल्यू इज वेरी लेस. फिर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया. सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस सीमेंस पर मीटर. सो यू सी दैट हाउ यू कन्वर्ट इज वेरी स्कूल लेवल. इस सेंटीमीटर से हमने मीटर में कन्वर्ट किया, इसलिए देखिए वैल्यूज अलग हो गया 0.985. देन 0.00229. अब देखिए फिर मैंने यहां पे लिखा मोलर कंडक्टेंस, यूनिट इज डिफरेंट, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर होना चाहिए, per mole. Now you see the difference. Here it is 0.00985. Here it is 98.5. Second, it is 114, 190. That means, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है. बहुत सारे क्यूब, वहां एक क्यूब का हमने आयंस कम है, 10 क्यूब का हो गया, बहुत सारे आयंस हैं, मूवमेंट हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, तो वैल्यू ज्यादा. दूसरा आप देख रहे हैं कि अगर मैंने बहुत डाइल्यूट कर दिया उसको, इन्फानाइट डाइल्यूशन कर दिया, सोल्यूशन को और डाइल्यूट कर दिया, तो ये वैल्यू भी आपका बढ़ गया 140. एंड सेकेंड थिंग दैट अभी हम दूसरा वैल्यू भी दिखाएंगे, इट इज फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट KCl बिकॉज इट डिसोसिएट्स इन द पोटासियम आयन एंड द क्लोराइड. What will be the second observation? आपको क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है? एनीबडी? आपको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन. जैसा जैसा हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, whether it is a SI unit or CGS unit, per meter में करे चाहे per centimeter. But now what is the, you have to explain these things. But when I have shown you the molar conductance, देखिए आप देख रहे हैं जैसा जैसा हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, ये आपकी मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ रहा है. आई एम टेकिंग फ्रॉम द लिटरेचर. इसके बाद मैं वो भी ये वैल्यूज दिखाऊंगा जो हमारे स्टूडेंट ने MSc में एक्सपेरिमेंट किए हैं. बट bear in mind that effect of dilution is also depends on the types of the electrolyte. The trend is, of course, there is a decreasing trends, there is the increasing trends, but if I take the strong electrolytes, this trends may be slightly different, and if I take the weak electrolytes, the trends may be different. मैं उस पॉइंट में आ रहा हूँ. Now I am coming to that effect of dilution on conductance. In my first lecture में मैं also आपको दिखाया था, I have given a YouTube because I have already prepared 2 YouTube lectures for experimental determination of Ostwald dilution law or determination of the K dissociation constant. And हमारे MSc के students, they have already determined, they have taken large number of acetic acid solutions and determined their specific. So therefore I have given the website, ये YouTube lecture है, और मैंने कल भी आपको दिखाया था. इसी का रिजल्ट्स को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. पहले मैंने आपको दिखाया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रिजल्ट, और ये यूनिट में इसलिए दिखाया सो दैट यू शुड हैव ए क्लियर कट आइडिया अबाउट दी
कन्वर्शन ऑफ दी, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पेपर में जो वैल्यूज दिया हुआ है वो सीमन पर मीटर में दिया हुआ है कि सीमन पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब मैं दिखाऊंगा आपको weak electrolytes experiment performed by MSc first semester chemistry student of Pandit Ravi Shankar Shukla University, and that part is already given in the YouTube lecture. So I have taken that these values from those things. अब इसमें भी मैंने वैसा ही किया, देखिए there are 5 or 6 solutions of acetic acid where the degree of dissociation is less, and you see 1 normal, 0.1, 0.01 normal, 0.001 n, 0.0001 n. Deliberately I have taken here normal, so that here I am written equivalent conductance. But of course the molecular weight and equivalent weight of the acetic acid is exactly same. So I can write 1 molar, 0.1 molar acetic acid, 0.01 molar acetic acid, 0.001 molar acetic acid, so that if I take the molar solution, number of gram moles, so it must be the equivalent conductance must be molar conductance. But that is not the thing. My thing is that you see here I have already seen, now we have my students and research scholars, they have taken the values with the help of a indigenous model, Indian make conductometer meter. So there may be experimental error, there may be solution preparation, so don't worry about the result. But आप लोग टीचर बनेंगे because you are all students of the integrated B.Ed, B.Sc, B.Ed, so you must always refer some of the standard textbook, like as I told you many times, Modern Electrochemistry by Glaston, where you will find the exact values of molar conductance or equivalent conductance or specific conductance. Okay, so you can compare. But ये ट्रेन आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ. So same thing I have seen here, because you know that values of that specific conductance is very less. Like I am taking the microsiemens, that is 1.7 into 10 to the power minus 3 microsiemens. But what is your observation? Here is also धीरे धीरे it is decreasing. This is millisiemens. I am sorry, it is millisiemens and it is microsiemens. Millisiemens means I can write like that, 1.7 into 10 to the power minus 3 per centimeter. And if it is micro, that means 52 into 10 to the power minus 6. But everywhere it is decreasing. Similarly, my students have also determined the specific conductance, maybe using the values of the cell constant less than 1. So there is a slightly difference, देखिए, because observed conductance multiplied by the cell constant, by the, if it is A multiplied by, I am not mention here cell constant, maybe 0.9 like that. तो आप देख रहे हैं कि here is also, because cell constant unit is centimeter inverse also. Therefore it is millisiemens, microsiemens. इसमें भी आप देख रहे हैं इसके साथ साथ ये वैल्यूज डिक्रीज हो रहा है. नाउ वी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस. फॉर्मूला आपको बिल्कुल मालूम है. इफ इट इज बी स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कापा मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन. सपोज ये जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर नॉर्मलिटी. सो हियर you see that जैसा जैसा हम dilute कर रहे हैं, and the unit is, you know that B unit is the Siemens per centimeter square. It is 1000 liter centimeter cube. So centimeter cube, centimeter to centimeter square.
and equivalent or per mole, that you can write centimeter, meter square also you can write that. If the value will be, अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू आपका मीटर में होगा तो यहाँ पे आपका होगा सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसा जैसा हम लोग डायल्यूट कर रहे हैं ये वैल्यूज आपका, and I am not talking about the degree of dissociation because that is equal to equivalent conductance as particular dilution divided by equivalent conductance of the infinite dilution. That is important, degree of dissociation. इसके पहले वाले में मैं आपको दिखाया था कि if I take very very dilute solution, infinite dilution, that time also I can calculate by using the ionic conductance of A ion plus ionic conductance of the cation or anion. तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है 390, तो ये और अगर हम जाएंगे ये हो जाएगा 390 और इन्फिनाइट डायल्यूशन। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी आप देख लीजिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और ऑफकोर्स इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे आपको, जब हम आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी थोड़े से बताएंगे आपको। तो सो देन वी कैन कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट है, बट दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। आवर ऑब्जेक्टिव इज टुडे to discuss the observed conductance, specific conductance, equivalent, and what would be the effect of dilution. Now what is the thumb rule, क्या आपको दिख रहा है? Observed conductance, specific conductance decrease हो रहा है और equivalent conductance आपका बढ़ रहा है dilution से। And explanation is very simple because we are talking about this observed conductance or specific, it is per unit volume। एक छोटा सा cube हमने लिया, so there are 4 molecules, if you dilute it, so the number of molecules present, ions per unit volume will be very less, अलग अलग हो जाएगा, इतने बड़े में इधर एक मॉलिक्यूल, इधर एक मॉलिक्यूल, इधर एक मॉलिक्यूल, so the movement will be very less, and so that therefore the equivalent conductance decrease. But whereas if I take the equivalent conductance, तो it depends upon the volume dilution, and काफी मॉलिक्यूल्स में जैसे हम डायल्यूट करेंगे जो उसके अंदर जो इंटर है, बिकॉज देयर इज ए कंप्लीट डिसोसिएशन इन इनकम्प्लीट बिकॉज वेरी स्लो, देयर लार्ज नंबर ऑफ आयंस एंड द कंडक्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट ऑफ द आयंस, माइग्रेशन ऑफ द आयंस। सो नेचुरली उसके अंदर इंटर आयोनिक अट्रैक्शन भी कम हो जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स आयंस फ्री मूवमेंट में रहेंगे, दे कैन मूव, सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस will increase. That is a normal definition or like that. So the last part I am coming the things, effect of dilution. The conductance depends on the number of ions and their mobility, and the path length cell geometry remains constant. Because आपने बार बार मैं कई बार समझाऊं कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो सब फिक्स्ड है, लेकिन नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द पर यूनिट वॉल्यूम एकदम कम हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। अगेन एंड अगेन, सपोज देयर आर 5 to 6 आयंस, बट अगर आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डाइल्यूट कर दिए, तो इसकी संख्या कम हो जाएंगे, मूवमेंट कम हो जाएगा, सो देयरफॉर डिक्रीज हो जाएगा। बट वेयर एज नाउ देयर आर सम, इतना डिफरेंस नहीं होगा जो हमारा स्टूडेंट ने बनाया, थोड़ा सा नाउ द ट्रेंड इज डिफरेंट। दैट मीन्स इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अंडर रूट ऑफ सी कॉन्सेंट्रेशन, सो यू सी द नेचर ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो नेचर होता है वो दूसरे ढंग का होता है, और ये इसका भी नेचर यू सी, इसको एक्सट्रापोलेट करना पड़ता है फॉर, अगर हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे, सॉरी। सो द नेचर ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट, नेचर ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट, एंड एट जीरो इनफाइनाइट डाइल्यूशन that is called the equivalent conductance or molar conductance at infinite dilutions. So why there is an increase? Because equivalent and molar conductance increases with dilution. As the solution is diluted, ions experience less interionic attraction, less ion pairing,
because there are already large number of ions, it is strong electrolytes. So उसके अंदर में रिपल्सन कम हो जाएगा, फ्री मूवमेंट होगा, फ्री मूवमेंट आपका होगा। तो और जैसा जैसे ये तो आपको फॉर्मूला से आपको समझ में आ रहा होगा, कापा इंटू कैपिटल V वॉल्यूम इन ml और Cc प्रेजेंट्स 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो V जितना बढ़ेगा, V डाइल्यूशन आपका बढ़ेगा, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ेगा। बट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दीज वैल्यूज रीच ए मैक्सिमम। उसके बाद आप कितना भी करेंगे, बिकॉज वो तो हो गया, उनका मूवमेंट हो गया, उनकी कंडक्टेंस प्रोड्यूस बाय दैट आयंस, उसके बाद वो नहीं बढ़ेंगे। सो देयर मस्ट बी ए कांस्टेंट वैल्यू, बिकॉज यू सी दी ये बढ़ रहा है, बट इन सम प्लेसेस इट इज लाइक कांस्टेंट हो गया 390। सो देयर इज नो चेंज इन, लाइक KCl में भी मैंने आपको बताया। So last part is that how do you calculate the degree of dissociation, because there is a relationship between this degree of dissociation with that dissociation constant strength of the concentration, that is called the Oswald dilution law. So degree of dissociation is the fraction of electrolyte molecules that dissociates in the solution. For a weak electrolyte, alpha is less than 1 because it only particularly ionizes. I am just prove it. क्या मैं बताया कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है जैसे एसिटिक एसिड है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मस्ट बी लेस देन 1। ये देखिए, इन सम वर्ड 0.0041, 0.013, 0.0417, 0.1278, 0.3318. So therefore, in next class we will discuss the theories of electrolytes. For strong electrolytes will be different, for the weak electrolytes will be different, the Oswald dilution law and other things. So ये देखिए, less than 1. But if it is a, I am not giving any example of strong electrolyte, but it is exactly equal to 1 because it is completely dissociated. तो कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, सो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी, मतलब आपने जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एक पर्टिकुलर मोलारिटी या नॉर्मलिटी में निकाला, दैट इज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि यू कैन टेक फ्रॉम द लिटरेचर, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। और आपके पास अगर हाइड्रोजन, इफ यू आर टेकिंग एसिटिक एसिड, सो आयनिक कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एसिटेट आयन, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे। लास्ट में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे ही परीक्षा में और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत केयरफुल रहना है। लास्ट सपोज ए एग्जाम्पल, यू कैन सॉल्व इट, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस of a zero, no calculator is required, no log table is required, just like a MCQ question. The specific conductance of 0.02 molar, I am not specifying here whether it is a strong electrolyte or weak electrolyte, मैं केवल एक AB लिखा हूँ, and the temperature is 27 degree centigrade and the specific conductance is 0.002 Siemens per centimeter square. Calculate the molar conductance. Anybody? The formula is, you know, that specific conductance multiplied by 1000 divided by the molarity. So it is so simple, 0.002 multiplied by 1000 divided by 0.02, answer is 100 Siemens centimeter square mole. But कभी कभी जब MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूछेंगे कि राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ सीमेंस पर मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर मोल पर इनवर्स, दैट मीन्स आई हैव टू कन्वर्ट इट, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम सिंपल सेंटीमीटर, तो यू नो, फिर से जैसा मैं बता रहा हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सो हियर इज सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 0.02 because सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्शन, तो स्क्वायर है तो इसलिए 10 to the power 4, so that is divided by 10 to the power 4, so the answer is 0.01 Siemens मीटर स्क्वायर मोल पर। ये मैं छोटा सा चीज है लेकिन मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ
स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. सो यू मस्ट. So thank you very much. Let me summarize the things. In first lecture, I discussed the fundamental concept. Second lecture, बहुत ही briefly मैंने आपको समझाया what is the actual definition of specific conductance, molar conductance or equivalent conductance, and degree of dissociation. And very important thing is that effect of dilution भी मैंने आपको समझाया. And I have solved only one problem. There are large number of problems available in the standard test book of Atkins or Levine or G.M. Barrow or आपके जो Behel, Tooley or any other Negi Anand and other books. So I request all the students, in order to understand the whole concept, please do solve large number of numerical problems related to the electrolyte conductance. In my third lecture, tomorrow I will deliver my third lecture. It will based on the Oswald dilution law, and these are all interrelated. Then of course I will discuss the Debye-Huckel theory. And thank you very much.